Very warm welcome each and everyone on Supergrad Cat YouTube channel. Today, IIM Ahmedabad के PGP final placements कैसे गए उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या highlights थे? So this particular piece of information we have gathered from three newspapers, India Today, Economic Times and Indian Express as well. इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट रिपोर्ट तो नहीं है बट हाइलाइट्स आ चुके हैं इस साल के 100% प्लेसमेंट हुआ. इट वाज क्लियरली सीन इन आईआईएम अहमदाबाद कि कहीं ना कहीं रिसेशनरी इफेक्ट दिख रहा है बट डिस्पाइट दैट इट cleared the placements fantastically. 398 students in the PGP class of 25 successfully secured the job despite the recessionary phase, as I already mentioned. Now, this particular placement included the lateral placement. जब lateral placement की बात करते हैं तो जिन students का work ex already होता है, so they sit for the lateral placement in IIM Ahmedabad, and the final placement track records where freshers usually sit for the placement process. Now, if you look into the placement process, you would see the sector-wise breakdown clearly उन्होंने दिया है, and consulting का dominance strongly देखा गया इस particular placement में, where BCG was the most popular recruiter and it made 35 offers. And उसके साथ साथ not only BCG, Essential Strategy, ये दो firms बहुत strong offers देके गए IIM Ahmedabad के अंदर this particular year. And consulting was the largest recruiter that ये clearly देखा गया. So all those people जो consulting में जाके काम करना चाहते हैं, IIM Ahmedabad is the dream place. इसलिए कहा जाता है one of the best institutes in the country. So 30 offers Essential Strategy ने दिए. In fact, McKinsey, Bain एंड कर्ने जैसे बड़े रिक्रूटर्स और रिक्रूट करने यहाँ पर आए. इनफैक्ट नीश कंसल्टिंग आजकल एक और भी अच्छा ऑप्शन बन रहा है. वहां पर भी 22% राइज was seen when you compare it to the previous year. पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो नीश कंसल्टिंग इज ऑल्सो हैपनिंग डोमेन दीज डेज कंसल्टिंग के अंदर ही. राइट नाउ फाइनेंस की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, वेल्थ मैनेजमेंट, सारे प्रोमिनेंट रोल्स फाइनेंस के अंदर भी दिए गए. गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े रिक्रूटर्स आए, 9 ऑफर्स उन्होंने दिए. एवेंडस कैपिटल ने 7 दिए. देन देयर वर सम बैंक्स, सम लुक्ड अप टू बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक सिटी बैंक, HSBC, Barclays, Deutsche Bank that actively participated in the recruitment drive over here. In fact, the cards and financial advisory roles also recorded a significant rise, 300% increase देखा गया financial advisory and cards में. FinTech is the order of the day. आज के टाइम पे FinTech बहुत strong role provider है. That also saw a surge of 40% क्योंकि आज का दौर FinTech का है. तो FinTech में आप मोबाइल बैंकिंग देख लो, चाहे आप कोई और कंपनी देख लो, फोन पे वगैरह देख लो. So they are actively recruiting these days, right? Now, let's look into the Genmen also, general management में. So Tata Administrative Services ने 5 offers provide किए हैं. GMR Group ने 4 offers दिए हैं. In fact, there were some other leading recruiters like Aditya Birla Group, Mahindra Group, Vedanta, Reliance Industries, and they all hired for the leadership positions only, right? Now, let's look into the technological and consumer tech. There was a growth in offers and huge 800% rise was seen in consumer tech roles. कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर impactful दिख रही है बाकी रोल्स में से. टेक्नोलॉजी देखी फाइनेंस में, फिनटेक में, same was seen in the consumer tech also, highlighting the increase of integration of technology in businesses. Notable recruiters were very prominent names: Google, Microsoft, Navi Technologies, and Browsers Tech, some among the prominent recruiters over here. इसके बाद we also saw retail and e-commerce, B2B and B2C experience of 400% growth in the offers over here. E-commerce firms like Amazon, Flipkart continue to recruit over here. अगर एडवाइजरी कंसल्टेंट की बात करें यहाँ पर तो वहां पर भी 120% humongous increase than last year. अब देखा गया वेक्टर कंसल्टिंग, EY, Parthanan and PwC were some of the prominent names that actually came on the campus to recruit the students. So retail and e-commerce as well as advisory consulting में भी एक strong placement देखा गया. Lateral placement की duration रही from January 6 to 21st, जब पहले lateral खत्म हो गया, जिसमें मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट रोल्स ऑफर किए गए स्टूडेंट्स को जिनके पास पहले से वर्क एक्सपीरियंस था. सो ये चीज एक बहुत अच्छी है अहमदाबाद की लिटिल रिक्रूटमेंट ड्राइव की. यहाँ पर फिर IQ ने 11 ऑफर्स दिए, नवी टेक्नोलॉजीज ने 10 पोजीशंस दी हैं लिटिल रिक्रूटमेंट में. सो दिस वाज अ प्लेसमेंट ओवरव्यू. और अगर क्लस्टर वाइज स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, the placement process was conducted in clusters based on cohorts of similar job profiles. So this was the way the entire placement process took place. Cohorts बनाए गए,
सिमिलर जॉब प्रोफाइल्स के, और उसी के बेसिस पर रिक्रूटमेंट हुआ। इंटरनेशनल ऑफर्स भी इस बार प्लेसमेंट डाइवर्सिटी को बढ़ा रहा है, काफी सारे प्लेसमेंट इंटरनेशनल प्लेसमेंट रिक्रूटर्स आए। इन जो रिपोर्ट्स अभी पब्लिश हुई हैं, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश हुई हैं, वहां पर एवरेज पैकेज का नहीं बताया गया है, सो आई एम ने शायद डिस्क्लोज नहीं किया होगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने जरूर दे दी है, एंड हाईएस्ट एंड एवरेज प्लेसमेंट फिगर्स अभी नहीं दिए, सो फॉर दैट वी नीड टू वेट फॉर द final placement report that will be released by IIM Ahmedabad. This is all from my side. I think one more stuff is remaining at that was the diversity in roles. So we saw that array of roles were given in consulting, finance, technology, retail, and general man. वो तो मैंने दिखाई दिया आपको। Opportunities भी काफी बड़ी, so you can see that tech opportunities काफी दी गई है। Consumer tech हुआ, fintech हुआ, वो notable growth दिखा रहे हैं। And alumni network ने बहुत strongly participate किया. So these were some noteworthy trends that were that was seen in the placement track record of IIM Ahmedabad. सब्सक्राइब सुपरग्रैट्स कैट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपको इस तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। नॉट ओनली दैट, we'll be coming up with some fantastic academic videos in days to come. तो अब सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। I am Rahul Vaswani now signing off. We'll be coming up with something fruitful in days to come. Thank you. Thanks a lot.